should take it slow. Welcome back to my channel, guys. Today I have something very interesting for you all. This is an amazing handlebar, and the build quality is pretty amazing. So I think for fitting the acceleration cable and the brake cable, I will have to change those cables because this is a bit heighted. I'm just gonna go to the mechanic now, buy those cables, and I'm gonna get this fixed on my bike. It's going to look pretty good. Okay, so this is how it looks after tying it. It's not gonna come off that easily. Whoa. I love this silencer. I just hope that this sound does not interrupt my recording. Ever since I got this silencer fit, I want to ride this bike more and more. Well, more pretty often than before. क्योंकि जब silencer की आवाज़ सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. Well, I don't know about others, but then rider को बहुत मज़ा आता है. Especially bullet वालों को. And these knuckle guards, they look beautiful. Well, अभी जब ये नया हैंडल बार लगेगा तो इसका सिटिंग पोस्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा. So it will be uplifted like this a little more. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Okay, so guys, we've reached the mechanic shop, and this is how it looks. Okay then guys, finally handlebar install हो चुका है और this is how it looks. बहुत ही अच्छा है और vibrations गए हैं क्या? Well, compared to before, vibrations बहुत ज़्यादा गए हैं और foot pegs का vibration तो almost negligible amount पे कम हो गया है. Plus अभी जब छोड़ते हैं इसको तो shake भी नहीं होता हैंडल. और sitting posture कितना अच्छा है, बहुत ही I don't know, it's too good. मुझे ये फिट करने के लिए एक्सेलरेशन केबल चेंज करना पड़ा. थ्रॉटल केबल है वो मैंने थंडरबर्ड 350 का लगाया है. ओल्ड थंडरबर्ड, नॉट थंडरबर्ड 350X, बट द ओल्ड थंडरबर्ड. कहाँ गया? और क्लच केबल भी मैंने ओल्ड थंडरबर्ड 350 का डाला है, नॉट द न्यू थंडरबर्ड 350X. ये रहा क्या. और नकल गार्ड्स अभी इसके ऊपर प्रॉपरली सूट हो रहे हैं. नहीं तो पहले हाथी के कान की तरह लगते थे छोटे हैंडल बार पे. वेल आई मस्ट से द बाइक लुक्स अ बिट डैशिंग. तो चेंज करने के बाद डिफरेंस मुझे ये पता चला कि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और सिटिंग पोस्चर इंक्रीज़ हो चुका है. और मेरे 600 रुपये गए पानी में नहीं, क्योंकि 200 का क्लच केबल, 110 का एक्सेलरेशन हो, क्लच केबल 110 का और
एक्सेलरेशन केबल कुछ 200 या 190 ऐसा कुछ था, और 300 रुपये तो उसने ले लिया फिक्स करने के लिए सब कुछ. So yeah, wait, I'll just stop somewhere and I'll show you how it looks. Okay, so बाइक ऐसी दिखती है. बहुत ही स्टर्डी हैंडल बार है, और वेल स्टॉक से तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अभी. और ये नकल गार्ड भी अभी सूट हो रहा है इसे. ओके, सो नाउ दिस इज डन. So guys, if you're new to the channel, then don't forget to subscribe, leave a like, and this is Rishi. I'll see you in the next video. Till then, chill out. You should take it slow.